Welcome again, students. Today in this module, I will explain you the further topics of chapter 6, physical and chemical changes. So our next topic is chemical reaction. We had studied about the chemicals and their symbols, valencies and atomicity. Now what is chemical reaction? A chemical reaction change is the result of chemical reaction two or more substance. That means ऐसी रिएक्शन जिनमें दो मटेरियल्स कंबाइन होकर के दो न्यू या एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. इस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंडर जाता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं. यानी इस केमिकल रिएक्शन में A और B रिएक्टेंट्स हैं और वहीं इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले C and D प्रोडक्ट्स हैं. That means the substance that undergo a chemical reaction are called reactants, and the substance that are formed as a result of chemical reaction are called product. Students, this chemical reaction is represented by the chemical equation. That's why it has equivalent arrow points, left side having reactants and right side having product. Let us take an example that hydrogen react with oxygen to give water as a compound. Hydrogen has a symbol H and oxygen has a symbol O. As we know that by atomicity that oxygen is a diatomic molecule and hydrogen is a monoatomic molecule, and this reaction hydrogen and oxygen combines to form water. This is a chemical reaction. That means a chemical equation is the representation of a chemical reaction using chemical symbols and formulae. In this module, the example of showing these chemical equation is it balanced? Students, you have to learn, you have to remember these things, that atoms of reactant and atoms of products should be equal. यानी दोनों तरफ number of elements के atoms equal होने चाहिए, तब वो equation balanced chemical equation कहलाएगी. So for balancing the chemical equation, first of all, students, compare the atoms of compare the number of atoms of element on each side, left side as well as on the right side. As in the reaction we are having hydrogen 2 and oxygen 2, while in the product section compound formula of water having hydrogen 2 but oxygen is lack of 1, oxygen एक कम है. इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है. सो इसकी बैलेंसिंग के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा. सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करनी है. स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट इफ देयर इज हैविंग 1 and 2 ऑक्सीजन, तो एज अ मैथमेटिकल 2 and 1 का एलसीएम 2 होगा. सो जिस तरफ 1 है उस तरफ 1 into 2 into करने पर 2 1 जा 2. तो अब ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गई. लेकिन अभी भी ये इक्वेशन पार्शियली बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 हैं और प्रोडक्ट्स की तरफ 4 हैं. यानी कि अभी भी ये रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है या पार्शियली बैलेंस्ड है. सो वी नीड टू balance this atoms of hydrogen also. So in the reactant sides, now hydrogen is 4 to 2 ja 4. So that means in the reactant side also having 2 that multiplies with the another 2 of hydrogen gives 4 hydrogen atom. Like oxygen is balanced already. So after multiplying 2 in the reactant side, now we are having hydrogen 4 in the reactants and 4 in the product also. Oxygen is 2 in the reactant and oxygen is same as the 2 in the product. Now this reaction is balanced. Hope you understand, student. That means for balancing the equation, chemical equation, you need to compare both the sides. Now we are coming in the main topic of this chapter, physical and chemical changes. We always see changes around us all the time, as ice melts into water, water freezes into ice.
Basically, these changes are of two types, physical and chemical. Physical, that means changes in the physical properties of the matter, like shape change होना, size change होना, form change होना यानी solid से liquid होना, कई बार color change होना या state change होना. इसमें कोई भी chemical reaction नहीं होती है, ना तो कोई नया substance form होता है, और इट इज रिवर्सिबल यानी इसे वापस से अगर कोई चेंज हुआ है तो वापस से उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है. लाइक आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक आइसक्रीम है जिसे हीट करने पर वो मेल्ट हो गई है. इसमें स्टेट चेंज हुआ, पहले वो सॉलिड थी, अब वो मेल्टिंग पोजीशन यानी लिक्विड है. दैट मीन्स in this change there is having change in state. that आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही रहेगी चाहे वो molten state में हो और चाहे वो solid. this means it is only a physical change because इसमें new substance form नहीं हो रहा है, इसका केवल state change हो रहा है. and it is reversible also. अगर हम वापस से आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दें तो वो वापस से solid हो जाएगी यानी वापस से वो फ्रीज हो जाएगी, molten नहीं होगी. इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे कि बैलून स्वेलिंग. बैलून को जब हम लोग स्वेल करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है और साइज चेंज होती है. इसका मतलब ये नहीं कि बैलून स्वेल होने पर यानी फ्लैटन होने पर ये बैलून नहीं रह जाता, ये बैलून ही रहता है. इवन बस्ट होने के बाद भी ये रबर बैलून ही रहता है. इस तरीके की रिएक्शंस जो कि रिवर्सिबल है, अगर इसकी एयर ब्लो आउट कर दें तो ये वापस से ए उसी तरह बन जाएगा. लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर को अगर हम फ्रीज कर दें तो वो आइस हो जाएगी, और आइस को अगर हम वापस से हीट कर दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द चेंज इन स्टेट एंड द सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. Boiling is also a process which converts the state of water from liquid to gas. It is also a physical change that because after boiling it can be condensed to form water again. It is a reversible. Mixing of sugar in water is also a reversible change, as if you blow it out of sunlight, then water is evaporate and only sugar particles get crystallized at the end. So basically this boiling, evaporation, condensation, steaming and crystallization is all physical processes. Cutting of paper into pieces is a change in size of physical change because it's several pieces of a paper is remain a paper. यानी पेपर के पीसेस करने पर भी वो पेपर ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्दर केमिकल चेंज नहीं होगा. इसलिए ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन होगी, फिजिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. इसका मतलब ये भी एक गुड एग्जाम्पल है फिजिकल रिएक्शन का. breaking of glass, plastic bottles squashing, container squashing, it is also physical change क्योंकि इसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है, केवल इसके शेप और साइज चेंज हो रहे हैं. इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस अपने आसपास देखते हैं. मेल्टिंग ऑफ बटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, evaporation of sea water, condensation of water vapor. It's all are basic changes that we see that falls under the physical category. And this evaporation is very helpful for obtaining salt from the sea water. As sea water is allowed, like in this process, sea water is allowed to stand in shallow pits. That means गहरे गड्ढों में इतने पानी को छोड़ दिया जाता है और सनलाइट पे वाटर एवापोरेट होता है एवापोरेशन की प्रोसेस के through, and water evaporates completely. Then few crystals of salts remain at the end of this shallow pits, but the salt obtained in this manner is not pure. यानी कि इसमें वाटर जो सॉल्ट मिलेगा वो प्योर नहीं होगा. इसको इसके क्रिस्टल्स, स्मॉल क्रिस्टल्स को फिर प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर क्रिस्टल्स को वहाँ से सेपरेट कर लिया जाएगा. लार्ज क्रिस्टल्स भी फॉर्म हो सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इसे बेटर डेफिनेशन से इस तरह समझेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन एज क्रिस्टल्स.
यानी कि वाटर में मिक्स्ड या लिक्विड में मिक्स्ड किसी भी सॉलिड को क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन करना बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. You can do this activity at home. Take a take a beaker full of water and add a few drops of sulfuric acid in it. Heat the water and when it start boiling, add copper sulfate solution. You will get this that on adding this copper sulfate solution after some time on boiling, you get the crystals of copper sulfate. On allowing it to cool and not to disturb, after some time you will observe the large crystal of copper sulfate at the bottom of the beaker. This is the best activity. You can better understand the process of crystallization through this mean. This crystallization is the best process as we get the crystals naturally from the seawater for getting the salt. But this is also used in industries to form the crystals of many substances like sugar, common salt, alum and copper sulfate. As you see, I have shown you the activity. In this activity, when we are adding the crystals of alum that suspended in the solution act as a base on which the large crystals is formed. You can also make crystals of other substances such as urea and copper sulfate using the same method also. It is the technique used for the purification of different substances. As you can take this alum in water solution in which in whatever the substances you wanted to purify, you can get the crystals of alum with the dirt and that are separated with the simple filtration method. So physical reaction is better recall this basic points of physical change, that changes in physical properties like change in size, change in shape, change in form, change in color, change in state. Better recall this physical change as this involve no chemical reaction, no new substance form. And while in the chemical change in which the substance changes its chemical composition and chemical property, it involves chemical reaction and maybe one or more new substance form. इस reaction में एक से ज़्यादा, इस change में एक से ज़्यादा नए substances बन सकते हैं और ये changes irreversible हैं. For example, जैसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस हम लोग आसपास अपनी लाइफ में देखते हैं. जैसे कि हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड पहले रॉ होता है और जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हमें फिर दोबारा से वो रॉ फूड नहीं मिलता है. जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है, तो क्या वो फ्रूट वापस से सीड में कन्वर्ट होता है? नहीं. ये एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक केमिकल चेंज है जो दोबारा से रिपीट यानी इरिवर्स्ड होती है, यानी दोबारा नहीं होती है. इस तरीके से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल चेंज देखते हैं. जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हम उसे सिंपलर सब्सटेंस में गेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, फिर वो सिंपल में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से उसमें डाइजेशन में एंड में हमें गेन होते हैं कई सारे मिनरल कंपोनेंट्स. Curd making of curd is also chemical change because by the using of lactobacillus bacteria, this lactose in the milk is converted into lactic acid, which can't be reversed into lactose again. And that means दही से फिर दोबारा हम दूध नहीं बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखते हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा. Student, hope you all understand this physical and chemical changes chapter. Thank you. Stay happy, stay healthy.